correct? Aja. So very good morning to everybody, correct? Let's start the class, right? Now I know that this month and next month थोड़ा festivity वाला क्या है फ्लेवर है ना सब जगह. टेल मी. पहले नवरात्रि फिर दिवाली. क्या बोलते हो? क्या? प्रणव, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. क्या घट स्थापना झाले व्यवस्थित? हो. हो गया सब बराबर? तुम्हारे में करते क्या नहीं करते? छाया तुम्हारे में करते क्या नहीं करते? नहीं. नहीं, हमारे में करते हैं सर। तुम्हारे में करते. हो गया फिर कल सब सही से. हाँ हाँ सब हो गया। अभी आई थिंक क्वेश्चन खाली आई थिंक दशहरा कभी है रे? 2 तारीख को है ना? थर्सडे को नेक्स्ट. ये सर 2 तारीख को है। 2 तारीख को है. उस दिन थोड़ा व्हाट विल डू इज विल टेक क्लास बट आई लीव यू अर्ली. वो कर सकते हैं, चलेगा? आई विल लीव यू अर्ली सेकेंड को. राइट, आई नो इट्स अ हॉलीडे वगैरह एवरीथिंग आई अंडरस्टैंड बट आई विल लीव यू अर्ली. इज इट ओके? टेल मी. एनी प्रॉब्लम विद दैट पार्ट? टेल मी. लवदी, व्हाट डू यू से? सेकेंड को. नाउ हाउ इज द कॉलेज गोइंग टू गो ऑन, लवदी? अभी नो So एग्जाम. college 12 o'clock से सर हाँ 5:30. वो ठीक है. 8 to 11 के बाद यू कैन गो टू कॉलेज, नो प्रॉब्लम. राइट. हाउ इज दिस? व्हाट इज योर फ्रेंड्स नेम? अस्मिता डूइंग? आई थिंक शी इज गोइंग टू टेक एफएम, नो? रिवीजन वाला अपना हाँ रिकॉर्डिंग सर. वाला. राइट. बट व्हाई रिकॉर्डिंग? देयर इज अ बैच गोइंग ऑन इन द इवनिंग. बट इवनिंग में तुम्हारा टाइम, योर टाइम ऑफ कमिंग फ्रॉम द ऑफ ये कॉलेज इज नॉट फिक्स, नो? इफ आई एम नॉट रॉन्ग. नहीं सर आने का फिक्स है सर. ओके. 5:30 खत्म हो जाए. Okay. Chalo, great. Let's quickly start. So quickly, let's revise whatever we have done in last week quickly, 5-10 minutes. Let's revise it so we can start, right? Aaja. So I hope the computation ka part, anyone, at least checkpoint 1, checkpoint 2. Checkpoint 1 mein were you okay with qualifying interest payment? Tell me. QIPs. Any problem with QIPs? Tell me. Right, if you have a look, we started with basically what are allowance, what are deductions, what is a charge, what is an exemption, all the 3-4 concepts. Are you okay with it? Tell me. Allowance means it will reduce the particular that is there. The particular may be income, the particular may be tax, correct? It may reduce that. Then exemption is tell me, in exemption, is the income directly fully non-taxable, or is it taxable and then you reduce the amount? Tell me. Exemption, what do you say? Exemption, what do you say? Fully taxable or fully chargeable or not chargeable? Bolo. Is it exemption means chargeable to tax or not chargeable to tax at all? Tell me. सर एग्जेम्पशन Not मतलब नॉट चार्ज। Not chargeable to tax at all. But when I say that I have received from some money and I am doing some contribution, employee contribution to pension out of it, is it exempt or is it deductible? Tell me. याद करो. एग्जेम्प Charge means if there is any income that is taxed, will be income charge. Tax charge means what? There is a tax increase that comes up, correct? Then there is a type of taxpayer. What are the 3 types of taxpayer? And what is the important word to remember in type of taxpayer? Total taxable income. Will you look at taxable NSI, SI, DI, or will you look at total taxable income? Tell me. For type of taxpayer. Total taxable income. Have a look. Then going ahead, correct? You have the non-savings income. If NSI is taxed in the taxable income and falls between 0 to 37,700, 37,701 to 125, 140, ये ठीक है. I think this should not be a problem. I think somewhere if you have problem, it might be subject to what? So when it comes to savings, same rate 20, 40, 45, correct? Correct. But subject to what? The savings income nil rate band, right? So savings income nil rate band depends on what type of taxpayer you are, right?
So if you are a type of taxpayer, you are a basic rate band taxpayer, then 1000 available. Higher rate band taxpayer, 500 available. And additional rate band taxpayer, will you have any SI NRV? Not at all. Then NSI plus SI. So now you know how to tax NSI plus SI. Do you look at where the savings income is falling, or do you look at the type of taxpayer to decide what will be the savings income nil rate band? Tell me. Where the income is falling, or will you look at what? Tell me. Taxable incomes. You will look at what? Taxable income and not look at what? Tell me where the income is falling. Okay. Then there was a starting rate band. Starting rate band says that in the first 5,000 of your taxable income, if there is any savings income, right? Now see, in the first 5,000 is savings income. Is there full 5,000 taxed at zero, or only the savings income that is falling within the first 5,000 should be taxed at zero? Tell me. Sir, only at first 5,000 column. Only the savings income falling within the first 5,000. Then dividend may any type of taxpayer you are, tell me. First 500 will be taxed at zero. And what will happen? 0 to 37,700, the rates are different: 8.75, 33.75, and 39.35. Right? Then pension contribution we did. There are two types of pension, correct or not? What are the two types of pension? Tell me. What are the two types of pension? Bolo. Personal and occupational. Personal and occupational. Occupational is what? More, if I ask you more genuine pension, is it personal or occupational? Genuine. जहाँ पे actual deduction, no tax planning happens. Think about it. No tax planning happens. Occupational या personal? बोलो. Occupational. Occupational, where no tax planning happens, occupational. But a lot of tax planning did happen before, but all those tax planning were clipped off. Tell me. Personal pension. What are the three implications of personal pension? Gross income concept, extension of bands, ANI implication. Correct? Sure. Then we saw example, old law how it was, new law how it is. Grossing up concept is okay. Extension of bands, correct? That is also okay. So total extension of bands. If I ask you that how much should the total extension of bands increase by? Should it increase by NPPC and NNA or NGAD, or should it increase by GPPC and GGAD? Tell me. GPPC and GGAD. GGAD. Correct. What is gifted donation? Basically, you give what donation to a charitable organization. It could be national as well as international. Red Cross also covered here. ये जानबूझ के इधर ना I have given national and international. When it comes to self employment, at that time this will be again टेस्टेड. ठीक है. फिर जीपीपीसी जीजीएडी का एग्जांपल देख लो. वी हैड गिवन और वी हैड डन अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स. पर्सनल अलाउंस. व्हाट डज पर्सनल अलाउंस से? टेल मी. If an individual has an adjusted net income of less than 100,000 pounds, the PA fully will be available to you 12,570. But do you look at net income or do you look at ANI? Tell me. Net income or ANI? Tell me. You look at ANI. Correct? ANI, is it part of computation or is it a working note that you have to do? Tell me. Working note. Working note. Correct. That means PA ka calculation will always happen in a working note. So if your ANI is more than 125, 140, no PA available. But if it is between 100,000 to 125, 140, there will be reduction of P oblique A. Right? How does reduction happen? The PA available to you minus the reduction of PA. Correct? ANI minus 100,000 divided by 2. You have a reduced P oblique A. Correct? Adjusted net income formula is nothing but net income that you get from your computation minus the GPPC GGAD. Right? Then going ahead, you had last thing that we had done, right, is nothing but your part of MA, right, or QIP. QIP is what? If, now tell me, if I take a loan to buy an asset, right, it is an employee owned company, I buy an asset as an employee and I want to use it for business purpose, correct? Plant and machinery basically, right? I use it for business purpose, okay? And the loan amount, is the loan amount a deductible expense, or the interest that I pay on the loan is a deductible expense? Tell me. Interest.
So QIP, does it reduce your income, right, by a deduction method, or is it an exemption that you get? QIP. Reduce income. Reduce income, that it's a deduction or an allowance, correct? Have a look. QIP question, correct? This question I think not there in a lot of books, correct? But you will find it here. Now I think in the new books 1 or 2 questions have come up. Should not be a problem. Now from this week onwards, okay, you will have a lot of homework, right? Right. Monday ko morning, right? See, I have Saturday, Sunday what classes, right? So Monday ko morning, yesterday I cancelled the class because we had done 4 days, right? In the week, correct? I feel Monday ko we could do instead of 8 to 10, correct? We could do 1.5 hour, 9:30 to 11. Baki Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, correct? We could do what? Full class. चलेगा? किसी को प्रॉब्लम? टेल मी. थोड़ा सा 1.5 hour ओनली. सर इफ पॉसिबल हाफ एन आवर जल्दी स्टार्ट करके 10:30 को छोड़ दो. मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं. 9 to 10:30 समथिंग लाइक दैट. ओके, राइट. चल. सो बिकॉज सो दैट संडे को रात को जनरली इट गेट्स लेट, देन मंडे को रादर देन बाद में से गेटिंग और डूइंग द क्लास 8 की जगह 9 करना एवरी टाइम, करेक्ट? उससे अच्छा 1 घंटा लेट ही शुरू करेंगे, बिकॉज जेन्युइन प्रॉब्लम जो है वो है, ठीक है? अब वो आई कैन नॉट हेल्प इट, राइट? डे बिफोर यस्टरडे आई हैड गॉन आउट, आई थिंक आई केम वेरी लेट. आई न्यू दैट आई वाज गोइंग टू बी लेट, इसलिए मैंने 7 बजे आपको मैसेज कर दिया, 7 o'clock, दैट देयर विल बी नो क्लास टुमारो बेसिकली, राइट? आई होप दैट वाज नॉट अ प्रॉब्लम, करेक्ट? पहला वीक है तो थोड़ा सा व्हाट यू कैन गो लाइटली. अभी नाउ फ्रॉम दिस नेक्स्ट वीक, करेक्ट, let's try that we can get full 8 to 11 classes, and let's try that the notes that were there, correct, the notes we can quickly what write down, ठीक है? या फिर जो that we had decided that if I put a what notes का writing, correct, copy paste the notes type of stuff, that will work. Let's do it for 1 or 2 days. Tell me how easily or how difficult it is for you to absorb the concept without writing the notes. चलेगा? ओके, ठीक है. मैरिज अलाउंस, हाँ, व्हाट इज मैरिज अलाउंस? टेल मी. एक मिनट. इफ आई आस्क यू मैरिज अलाउंस, इज इट अ इनकम अलाउंस और अ टैक्स अलाउंस? थिंक वेरी properly and give me an answer. Income allowance or tax allowance? MA. Tax allowance. Tax allowance. Starts as an income allowance or starts as a tax allowance and remains a tax allowance? Tell me. Starts as a tax allowance or income allowance? See, when it is transferred from one spouse to another spouse, it starts as an income allowance, but by the time it comes to the other spouse, does it remain an income allowance or does it become a tax allowance? Tell me. बोलो. What does जनता say? सर एक बार वो रिवाइज करा देंगे इनकम अलाउंस और टैक्स अलाउंस. Yeah. वही बोला ना, इनकम अलाउंस डज व्हाट? रिड्यूसेस योर इनकम और इंक्रीजेस योर इनकम. रिड्यूस. तो पीए, सी हाउ डज पीए वर्क आउट? इन पीए व्हाट इज द बेसिक लॉजिक? आ जाओ. नाउ सी, देयर हैव टू बी टू स्पाउसेस. द फर्स्ट कंडीशन इज व्हाट? बोथ द स्पाउसेस हैव टू बी व्हाट? टेल मी. बेसिक रेट. Basic rate band taxpayers. That means will you look at net income of the spouses or total taxable income of the spouses? Tell me. टैक्सेबल इनकम. Taxable income. The total taxable income, if they are a basic rate band taxpayer, both the spouses, then only this will apply. See, in that second condition is one spouse should have what? Unutilized PA, correct? If they have unutilized PA and they want to transfer it, is it compulsory to do this or do you have to elect for it? Tell me. देखो जरा इधर क्या लिखा है मैंने, बोलो. इलेक्ट. You have to elect for it. मतलब is it compulsory or not compulsory? नॉट कंपल्सरी. Not compulsory. देर किधर लिख लेते क्या? रुको.
नोट लिख लो किधर, एमए में, समवेयर इन एमए राइट अ नोट. करेक्ट. इट इज नॉट कंपल्सरी टू, it is not compulsory to go with MA. Correct. It is not compulsory to go with marriage allowance. You have to elect for it. चलेगा क्या? Tell me. Okay. So now again coming back to what you are doing, right? So what am I trying to say? देखो सोच लो, सुनो. That if MA is to be elected and not to be what? Tell me. Something that is compulsory, right? So have a look. In that case, tell me, ये spouse केस में से MA, सी स्पाउस का पीए का यूटिलाइजेशन फ्रॉम द पीए ऑफ द स्पाउस 1260 pound is transferred as a income allowance, and by the time it reaches the other spouse, does it remain an income allowance or does it become a tax allowance? बोलो बोलो. एक्सेलेंस. टैक्स अलाउंस बराबर है क्या? हो जाता है टैक्स अलाउंस, देख लो, राइट. बट व्हेन इट कम्स टू द transferee spouse's PA, will she say that, sir, 12,570 is my what PA and 11,500 is my utilization, I will only transfer 970 or 1,070 to the other spouse? Is it allowed or compulsorily the amount has to be 1260? Tell me. 1260. 1260, and it is given first preference. So whenever you elect to what, transfer PA, transfer MA, right, your PA amount, the transferee spouse's PA amount will reduce from 12,570 minus 1260 to available being 11,310. Even if her income is a bit above 11,310, still what will happen? Tell me. She can what, use only 11,310 against her income. देख लो ये एग्जाम्पल, दिस एग्जाम्पल इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. करेक्ट. एंड ऑल्सो द कंडीशन ऑफ बेसिक रेट बैंड टैक्स पेयर. ये होमवर्क किया क्या आपने? डिड यू डू दिस होमवर्क? टेल मी. Yes. इफ यू हैव डन, टेल मी. पहले वाला वेन्स इनकम टैक्स लायबिलिटी, हाउ मच इज इट? 5364. 5364. एवरीबडी गेटिंग 5364. छाया क्या लगता है? टेल मी. Yes, sir. 5364 yeah. ब्रॉन्सन, सप्तांशु, ट्राई किया बेटा? सर 5364 yes. 5364 आया है, ठीक. सर मुझे थियरी वाला क्वेश्चन अच्छे से हाँ नहीं उसी पे आ लगा. रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ. Tick the appropriate box to show which of the following items of expenditure are deductible in the calculation of an individual's taxable income. A contribution into personal pension scheme. Personal pension scheme, is it deducted from your income or does it have three implications? Tell me. Main computation में, is it a income allowance or is it from ANI it is deducted, which is a, tell me. ANI. बोलो ANI. तो इधर डिडक्टेबल फ्रॉम इट्स इंडिविजुअल्स टैक्सेबल इनकम में से डिडक्ट होता है क्या? टेल मी. No. From the taxable income after checkpoint 3, do you deduct anything? No. Not at all. Correct. Gifted donation deductible, अबे एक मिनट, सॉरी, नॉट डिडक्टेबल ऐसा लिखना पड़ेगा, नॉट डिडक्टेबल. करेक्ट. हाँ. A charitable gifted donation deductible or not deductible? Tell me. Non-deductible. Not deductible. But when it comes to a contribution into employer's occupational pension scheme, if I do a, is it an exemption or deduction? Tell me. Exemption. Deduction. बराबर है क्या? हाँ वही सर. करेक्ट. फिर क्या है इसका पर्सनल अलाउंस एंटाइटल्ड निकाले आप? टेल मी हाउ मच इज द पर्सनल अलाउंस दैट शी इज एंटाइटल्ड टू? 9420. 9420. Is everyone getting 9420 as their answer? Please tell me. चलो ये वाला क्वेश्चन किया. टोटल टैक्स लायबिलिटी हाउ मच इज दिस बाबा? टेल मी. Sir, A option A 1996. एवरीबॉडी गेटिंग 1996. Yes. आप पीए माइनस किया बेटा?
Yes, sir. ठीक है, चलो एक CBTC, देन आई हैव टू गो टू सेविंग्स इनकम, एंड देन प्रॉब्ली सेविंग्स और डिविडेंड इनकम दोनों एक बार कर लेंगे, एंड देन वील गो टू व्हाट, टेल मी, दिस, व्हाट इज इट, रेसिडेंशियल स्टेटस बेसिकली। या रेसिडेंशियल स्टेटस बाद में भी कर सकते, वी कैन डू इट लेटर ऑन, नो वरीज, करेक्ट। नाउ आई एम एक राइटिंग, और था लास्ट, सॉरी, एक और था क्वेश्चन होमवर्क में लास्ट। एक और था बेटा, सॉरी। हाँ ये रहा, इनकम टैक्स डिविडेंड 56,950, सर पहला इसमें मेरा 500। 200 से रॉन्ग हुआ था, तो बाद में हाँ सॉल्यूशन देख के थोड़ा 500, समझ गया। हाँ क्या 200 से क्या रॉन्ग हुआ था? मतलब मैंने 500 को जीरो से टैक्स किया, उसके हाँ बाद मैंने आगे 37,700 ले लिया नहीं, था। 37,200 करना पड़ेगा ना। यस, उसके, तो हाँ तो इस, so that is now you understand why the timeline approach is good. हाँ, यस सर। So in your taxability timeline approach is very good. How much is the answer, Baba? 5273.25। तो सर 5 to मेरा 7, तो 5510 आया है। 5510 pounds, ओके। करना है क्या, डू यू वांट टू डू दिस, आ जाओ, ओनली डिविडेंड इनकम 56,950, करेक्ट। So here there is a checkpoint 37,700. Is this okay with you? Tell me. सर इसमें यस, पर्सनल अलाउंस डिडक्ट नहीं करेंगे क्या? हाँ एक मिनट, पर्सनल अलाउंस आएगा ना, 56,950 टैक्सेबल इनकम नहीं है, ओनली इनकम, यानी ये टोटल इनकम आएगी, बराबर है। रुको, ए, 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 हम्म, कितना है 56,950, करेक्ट, माइनस पूरा 12,570 विल बी अवेलेबल टू यू, सो हाउ मच इज द, ये हो गई नेट इनकम, करेक्ट, और 44,380। 44,380। 44,380, correct. Then we have what, 0 to 44,380, correct. Then here 37,700, correct. First 500 at 0%. Then how much is this? 32,700 at what rate? Tell me. 8.75%, correct, no? And सर then 37,200 होगा ना? 37, okay. 32,700, 37,200, correct, at 8.75. Remaining, how much is this? That will be at 33.75. 6680। 33.95 या 33.75 है? 75। 75 ही है ना, हाँ। कितना है, हाउ मच, सॉरी? 6680 था। 6680, add both of them, 5510 या 5273? 5510 है सर, फाइव कुछ तो फाइव गलती हो गई। ओके, नाउ आर यू गेटिंग इट एवरीबॉडी? हाँ, टुडे आई विल गिव यू द नोट्स, हाँ, आज नोट्स मिल जाएंगे आपको, यू डोंट हैव टू वरी, तो एग्जाम किट, स्टडी टेक्स्ट वगैरह। चल, चाइल्ड बेनिफिट टैक्स चार्ज, हाँ, व्हाई डिड यू डिडक्ट, एक मिनट, व्हाई डिड यू डिडक्ट, एक सेकंड, हाँ, PA year, can anybody tell me? Because is this net income, total income? Tell me, dividend income is 56,950. Is it saying that it is taxable income? Tell me. नेट इनकम। नहीं सर, नेट Total है. इनकम है। There are no QIPs. So direct total income is equal to net income. From that net income, you have to deduct what? PA. Correct or not? Tell me. This is how it is. चलो. Write down next heading, child benefit tax charge. ठीक है. Let me just take the screenshot of the notes, so we can use a refer table from notes. I'll write child benefit tax charge table, ठीक है.
Is the child benefit tax charge table visible to you? You don't have to read it as of now, but is it visible properly? Can I explain this? Then we can come to the table. चलेगा? What is child benefit that you receive? First, let's focus on the words that we know, right? There is a child benefit tax charge. Do you know the meaning of tax charge now or no? Yes. Tax charge means will it increase income or increase tax? Tell me. Increase the tax. Increase the tax. Okay. Chalo. That is also okay. That also I think you are comfortable. Now, one more tweak I'll give you here or something to think about, correct? Tax charge may, right? You know tax charge. Let's understand child benefit. Now, what is child benefit? Now, let's say I'll give you best example. One of my cousin, right, is in the UK right now, somewhere in London, right? So she has given birth to my nephew. Basically, he's I think what 3 4 years old, correct? So 3 4 somewhere 4 5 years old, right? So he was born in UK, right? Not in India. He was born in UK. So now is a UK citizen. See, both of my sister and my what brother-in-law, as in or what do you say, my jija, correct? Both of them are not UK citizen as of now, but they are Indian citizens, correct? But their kid is now a UK citizen. Now UK has a policy where if you have a small kid with you, correct or not, right? There is always a scope, right? That the government will help you with the basic expenses. So the government understands that you are earning and maybe the earning is same, but now you have a new family member, right? Because it's a UK citizen, they don't want any UK citizen to stay hungry or have any kind of problems. They give certain money to the parents as child benefit, right? So as child benefit, they will give you some money. Correct? Example, right? Every state has a different law for giving you child benefit. Correct? So let's say London mein there is a different law. You have other states or cities. There what a different amount of so see the cost of living in every other city is different. Correct? So according to that different what tell me cost of living and expenses they have done what tell me. Just a second. Huh? So different laws, correct, in different states and cities, right? Different amount of child benefit, correct, will be received. That is how it is, right? So a child benefit tax charge, right? CBTC, right, is something that you need to look at, correct? So CBTC के अंदर what you have to do is whatever child benefit that you receive, let's say there is a couple, Mr. A and Mr. B. एग्जाम्पल लिख लेते क्या एक मिनट राइट डाउन एग्जाम्पल so you write refer table in notes whatever right Mr. A and Mr. B is a couple who have a child and receive child benefit of £2,700 for tax year 24-25. The details of income of both spouses is as follows.
Mr. A, salary income is equal to 65,000 pounds. 65,000 pounds. PPC डन यानी क्या है? व्हाट इज PPC? पर्सनल पेंशन कंट्रीब्यूशन डन इज इक्वल टू 12,000 pounds. Gifted donation done 1,000 pounds. Mr. B, interest income 21,000 pounds. No GPPC or no PPC or GAD done. ठीक, कोई प्रॉब्लम? So now Mr. A has a salary of how much? 65,000. Now what does the law say? Hear me out. लिख लिया क्या? Have you written the example down? Law has 2 or 3 conditions. आ जाओ. Come to the table for a second. Law says if ANI, ऐसा रीड करने का, if ANI of both the spouses is less than equal to 50,000 pounds, less than equal to 50,000 pounds, no CBTC will attract. Now that means, tell me, you have to calculate ANI of both Mr. A as well as Mr. B. आ जाओ. तो first condition, can I write condition 1? बोलो. Condition 1, first calculate ANI. Chalo, what we'll do? Have a look. We'll do calculate taxable income. Taxable income नहीं, tax payable by Mr. A and Mr. B. चले? We'll do side by side करते क्या? और one below the other करते ना को side by side no, right? We'll do one below the other. Mr. A, आ जाओ. Mr. A has salary income. Salary income will go as NSI, SI or DI? Tell me. NSI. NSI. And will it be part of total income first? Tell me. So how will we do it? Have a look. Sir, NSI. देखो how I am doing it. Salary 65,000. Correct. Then I will say what? That boss, this will go to no other income. So this will only go to what? Total income. Have a look. Are there any QIPs or any other loss relief given to you? So minus what should I do? QIP or nothing, correct? So minus nothing, correct? QIP is 0, logically, correct? Then what will be left? Tell me. From the total income, you deduct QIPs and loss relief. What will you get? Tell me. From total income, something deducted. What do you get? Net income. Net income, correct? How much is net income then? 65,000. From the net income, what do you deduct? Tell me. PA. PA. For PA, what do you calculate? Tell me. ANI. ANI. So first NI is how much? 65,000. From this, what will be deducted? Tell me. From this, what will be deducted? Bolo. The GGPC and GG.
जीजी जीपीपीसी एंड जीजीएडी, करेक्ट? तो माइनस जीपीपीसी करो, सेम 12 and 1000, no? या डू दे हैव टू बी ग्रॉस्ड अप? टेल मी। सर पहले ग्रॉस करके फिर हाँ, निकालें। 12,000 by 80 into 100 बराबर है। तो हाउ मच विल बी द ग्रॉस्ड अप मनी? 12,000 you are paying, government will pay some amount, so total amount is almost how much HMRC will pay? 48,750 total ANI. 14,750, okay? 48,750 sir. ये 48 कैसे आएगा राजा? माइनस Plus, करके ANI बोल रहा है क्या? हाँ सर ANI बोल रहा ANI, okay, ANI is 48. 15,000, Can you help me with this? कितना होगा, सॉरी? ये 15,000, 50,000, okay, and ये 1000 GGAD है, करेक्ट? GGAD 1000 by 80 into 100 कचरा है, बोलो। 1250, बराबर है ना? एवरीबडी ओके विद दिस? चलो, 48,750 is your ANI. As ANI is how much? बोलो। How much is PA then available here? Tell me. 12,570. PA full available? So PA 12,570 done minus. Right? So how much is the taxable income? Taxable income. 52,430. 52,430. Right? Is per tax liability? How much is the tax liability? Is there any nil band on this, Baba? Tell me. कोई nil band है? Directly पूरा NSI NSI. 37,700 at what? 20 and additional amount at 40. Tell me the tax liability. 37. अरे हाँ, but there will be something, no? Extension of bands होंगे क्या? Tell me. yes, How much extension of bands? कुछ 16,250. 16,250, Do it. 37 plus 16,250. So how much will be the band? 0 to how much, Baba? So I think full amount will be taxed at 20% is what I've understood. Tell me. 53,950, Therefore, पूरा 52,430 will be taxed at what rate? Tell me. 20, 20%. How much is that? Tell me. One zero four eight six. 10486. अभी क्या करो, इधर प्लस सीबीटीसी करके छोड़ दो। प्लस सीबीटीसी, ऐसा लिखो सीबीटीसी, राइट? ब्लैंक छोड़ दो एंड राइट टोटल टैक्स लायबिलिटी। करेक्ट? अब है क्या नहीं वो देखना है ना पहले, करेक्ट? दिस ऑल्सो लीव इट ब्लैंक, करेक्ट? अब मिस्टर बी के वर्किंग में चलो। मिस्टर बी, ये छोड़ दो लाइन, करेक्ट? मिस्टर बी, or can I do side by side? You do one below the other. I'll do side by side. So we can have a look at both because you have to do take care of two conditions, correct? Can I do Mr. B here? Mr. B का क्या है? Only savings income. Easy है comparatively. SI column, interest income, correct? How much is interest income, Baba? Tell me. 21,000, correct? This will only become total income. 21,000, correct? Any QIPs here? No QIP, zero. What will be net income? Tell me. 21,000. Now tell me the PA calculation here.
as there is no GPPC and GGAD, tell me NI will be equal to what? Tell me ANI. बराबर है ना? Have I given that note to you? Yes. NI is equal to ANI. In that case, that is equal to how much? 21,000 less than 100,000. So how much is PA available? Full. Full PA. So deduct that 12,570 from your PA. 12,570 deducted. How much remaining taxable? नाइन इन या 8 आएगा? 8 आएगा. 8430. And tax on this at up now tax liability. What type of taxpayer are you? Tell me. Basic. Basic. So how much is the basic income or your savings income nil band that will be available to you? 1,000. 1,000. And is there any savings income that is falling within the first 5,000? Full Yes. savings income, this full 8430 is savings income and falling within the first 5,000. So Yes. first 5,000 SI, SRB, बराबर 5,000 at what rate? Tell me 0%. Correct. And उसके बाद over and above it savings income nil rate band बोलो 1,000 at 0%. Then remaining ये zero. Remaining how much is there? Out of the 8430, 6,000 is taxed at 0%. 2,430 at what rate? 20%. 20. How much is the tax? बोलो 486. 486 pounds. Okay with it? चलो इसमें कोई प्रॉब्लम? बोथ द स्पाउसेस का टैक्सेशन, फर्स्ट टेल मी दैट. ओके है? Now I'm Yes. using a different pen to look at all the three conditions. ठीक है, आ जाओ. You could also use a different pen. आ जाओ. Child benefit tax charge. देख लो. If ANI of both the spouses is less than 50,000 or more than 60,000 or between 50 and 60. पहले तो देखो ANI of both the spouses देखो. What about ANI about both the spouses? एक मिनट. The condition 1, करेक्ट. तो मैं इधर नीचे लिखता हूं कंडीशन, या इधर लिखने का जरूरत नहीं. आई थिंक शुड बी मोर देन इनफ. दो बोथ लुक एट बोथ द ANIs. आ जाओ. ये रहा ANI इधर एंड ये रहा ANI इधर. इज द ANI लेस देन 50,000 in both cases? Tell me. Or in both spouses, is the ANI less than 50,000? Tell me. Yes. So will there be any CBTC that will arise? Have a look. सर ANI both the spouses का combined है या दोनों का अलग अलग? Combined नहीं, individually. Combined नहीं, individually. Both the spouses there लिख देता हूँ individually. ठीक है ना बेटा? अच्छा क्वेश्चन पूछा तूने. बराबर है. हमने सोचा नहीं था कि ऐसे कंबाइंड भी कोई सोच सकता है. तो if both the spouses individually is less than 50,000, less than equal to up to 50,000 चलेगा. Correct? So is any spouse individually having more than 50,000? No. Right? No. Right? तो will CBTC apply? तो इधर नीचे मैं नोट लिख देता हूं. इधर इधर आप भी CBTC के यहाँ 0 लिख दो. करेक्ट. स्टार बना लो and write the note below in the star. Note, as the ANI of both the spouses is individually below कितना? 50,000 pounds. So CBTC
will not apply, right? तो इधर मैं I will do what? एक सेकेंड ना, लिख लो, write it down. I hope that is okay. Tax liability then close off, it is 10,486 only. Correct? Can I go ahead? इधर मैं लिख देता हूँ एग्जाम्पल, ANI both spouses less than 50,000. Hey, when you look at the notes, do you feel very confident ऐसा every other classification is in a different note? Smooth जा रहा है? Tell me. PA less than 100,000, there is a different question. PA more than 100,000, there is different question. PA between, is it going smoothly? Tell me. Yes. So CBTC will not apply. Correct? Sure. Now taking the same thing ahead. Next example I'm giving you. Now I'm doing more than 60,000. ठीक? So you also write ANI both spouses more than 60,000. Example, this will be a very simple example. Okay. Now you know how to do the calculation. Mr. A and Mrs. A are spouses and receive child benefit of 3,000 pounds for tax year 24-25. Mr. A is working. Yeah, better. Mrs. A is working and Mr. A is a stay-at-home dad. Mrs. A receives 85,000 pound salary income. No GPPC, no GGAD. Calculate tax liability of Mr. या Mrs. A ना, Mrs. A. ठीक? How will you do this? पूरा टैक्स लायबिलिटी तक निकालो, टैक्सेबल इनकम. नाउ टेल मी, from 85,000, correct? What will be the total income? So how will I do this? Have a look. NSI, salary income, 85,000. This only becomes your total income. Correct? Minus any QIP not there or anything not there. Directly this only becomes your net income. Is there any GPPC, GGAD? Tell me. GPPC, GGAD? No GPPC, GGAD. तो net income में से now if I do the PA का calculation, NI is equal to ANI.
is equal to 85,000. Less than how much? Tell me. 100,000. So full PE available how much? 12,570 minus P oblique A. 12,570 negative. Tell me. What is taxable income? बोलो. 72430. 72430. इस पर tax liability, how will you calculate? Is there any extension of bands or anything? 0 to 37,700 at 20%. ये मेरे को याद है 7540. And then you have 72, or I will write like this, 72430 minus 37,700 at what rate, Baba? Tell me. 40%. How much is that, Baba? Calculate. सर एक्सटेंशन ऑफ बैंड्स नहीं करेंगे? एक्सटेंशन ऑफ जीपीपीसी जीजीएडी है क्या मैडम? एक सेकंड. जस्ट अ सेकेंड गाइस, आप कैलकुलेट कर. चल चल आ जाओ. तो 7540 कितना है वो? 40%. टेल मी. 13,892. क्या क्या क्या? 13,892. 13,892 टोटल. अब एक मिनट, यहां तक हो गया? करेक्ट. ओके. नाउ प्लस राइट डाउन चाइल्ड बेनिफिट टैक्स चार्ज. करेक्ट. हाउ मच इज चाइल्ड बेनिफिट टैक्स चार्ज? कम टू द टेबल फॉर अ सेकेंड. यहाँ तक खाली चाइल्ड बेनिफिट टैक्स चार्ज लिखो. आ जाओ. कम टू चाइल्ड बेनिफिट टैक्स चार्ज टेबल. कम टू दिस. इफ एनी स्पाउस, पहला क्या बोला मैंने? लेफ्ट साइड, both the spouses individually should have ANI less than 50,000. But either when I go here on the right side, what is the right side saying? Read it. Any spouse हाँ, any spouse. greater than अभी 60,000. अभी इस केस में मिस्टर या मिसेस या मिस्टर ए जो है, करेक्ट. मिस्टर ए इज ही हैविंग एनी इनकम? मिस्टर ए, हाउ मच विल बी ANI ऑफ मिस्टर ए देन? 0. मिस्टर ए का ANI कितना है? टेल मी. 0. बराबर है क्या? देख लो. बट मिसिज ए का ANI कितना है? बताओ मेरे को. हाउ मच इज मिसिज एज ANI? 85,000. 85,000. करेक्ट. तो इन दिस केस, इज वन ऑफ द स्पाउसेस आउट ऑफ द टू स्पाउसेस और एनी वन स्पाउस और एनी स्पाउस, is it having more than ANI more than 60,000? Tell me. Yes. Right. So in that case, whatever child benefit, that means 100% of child benefit will be paid back to government as tax charge. So how much is the child benefit that you have received? Tell me. देखो जरा. 3,000. 3,000. फुल 3,000. देखो ऐसा लिखने का. 3,000 into 100%. How much is that? 3,000 pounds.
This will be added to the tax liability. So how much is the total tax liability now? बताओ. Or tax payable? Tell me. 24,432. 24,432 pounds. ठीक है. ओके, देख लो, कोई प्रॉब्लम? ठीक है. डन. कैन आई गो अहेड? टेल मी. लास्ट क्वेश्चन. और एक और क्वेश्चन होगा. 2 क्वेश्चंस विल हैपन हियर. ये हो गया हो तो आगे आई कैन गो. बोथ स्पाउसेस तो नहीं, बट एनी स्पाउस लिख देता हूं यहाँ पे. एनी स्पाउस मोर देन ANI, एनी स्पाउस मोर देन 60,000. चलेगा ना? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट. करेक्ट. वापस लिखता हूं. एनी स्पाउस. करेक्ट. ANI एनी स्पाउस more than 50,000 but less than 60,000. That is क्या लिखो? That is between 50,000 to 60,000. ठीक. नेक्स्ट एग्जांपल लिखो. जस्ट अ सेकंड ना. चलो राइट डाउन नेक्स्ट एग्जांपल गाइस.
Mr. A and Mrs. A are spouses and receive child benefit of 3,600 pounds for tax year 24-25. Correct. Mr. A has salary income of of 69,000. PPC paid. And GGAD 1,000. Correct. Mrs. A has salary income of 55,000 pounds. ये एक मिनट इधर लिखो, हैज नो सैलरी, हैज नो इनकम. पहले नो इनकम लिखो, ठीक है, बेटर है. करेक्ट. कैलकुलेट टैक्स लायबिलिटी. चलो आप टैक्स लायबिलिटी तक जाओ. राइट, मेरे को 1 मिनट दे दो. ठीक है, होने के बाद मेरे को आवाज दो.
How much is the tax liability, guys? बोलो, कर सकते हैं? प्रॉब्लम है? बोलो. The ANI is how taxable much? income 56,430 करेक्ट है. टैक्सेबल इनकम, एक मिनट, डायरेक्ट नेट इनकम लिखो अभी चलेगा. नेट इनकम इज हाउ मच? कोई क्यूआईपी नहीं है. हाउ मच इज नेट 69,000. इनकम? 69. उसमें से व्हाट विल बी डिडक्टेड? टेल मी. पीए. फॉर PA पीए एएनआई कैलकुलेशन. चलो, full नेट amount. इनकम 69,000 पाउंड्स. करेक्ट. बराबर है. Minus 15,000. जीपीपीसी 15,000 हो जाएगा. Minus 1,000. -1,000. हाउ मच इज इट? टेल मी. 53. 53,000. एएनआई कितना है? 40,430 फाइनल. ठीक है. माइनस पीए कितना है? पीए विल बी फुल अवेलेबल. करेक्ट. कितना है बाबा? 12,570. 12,570. क्या लगता है छाया? 12,570 माइनस करने के बाद हाउ मच विल बी रिमेनिंग बाबा? 56,430. 56,430 पाउंड्स. करेक्ट. चलो आगे फिर. अब निकालो. इसमें एक्सटेंशन ऑफ बैंड्स होगा क्या? टैक्स. Yes. तो 0 to 37,700 प्लस कितना करो? 16,000 करना पड़ेगा. सो हाउ मच आर द बैंड्स? टेल मी. 53 कितना हो जाएगा? 53 ऑलमोस्ट ना. 53 53 700. 700. 50 या 43? 53. 53 700. ठीक. चलो. तो एंड देन मोर, यानी 53 700 तक एट 20%. और उसके ऊपर कितना है भाई? हाउ मेनी दैट एट 40%? टेल मी. 56,430 माइनस 53,700. दिस इंटू 40% बाबा. टेल मी. ये 20% कितना है? टेल मी. 10,740. 9,000 ना. 10,740. 10,740. And how much is 40% of this बाबा? 1092. 1092. Right. Now this is Mr. A. Okay. Okay. अब आ जाओ. कम बैक टू द टेबल. व्हाट डज द टेबल से? आ जाओ प्लीज. एनी स्पाउस, एनी, दोनों में से कोई भी स्पाउस हैज अ एएनआई बिटवीन हाउ मच? टेल मी. 50 and 60,000. पहले इधर जाओ. गो टू एएनआई क्वेश्चन. एएनआई कितना है इस क्वेश्चन में? इज इट लेस देन 53. 50,000, मोर देन 60,000 और बिटवीन 50 and 60? टेल मी. Between. बिटवीन 50 and 60. तो इन दैट केस व्हाट इज टू बी डन? पहले समझ लो व्हाट इज टू बी डन. ये हो गया टैक्स लायबिलिटी. दिस इज ओके. नो टेंशन. ओके. अब प्लस यू हैव टू राइट सीबीटीसी, बट देयर इज अ वर्किंग दैट वी हैव टू डू टू सीबीटीसी. ओके. हाउ मच दैट चाइल्ड बेनिफिट दैट इज रिसीव्ड? टेल मी. चाइल्ड बेनिफिट कितना रिसीव्ड है? 3,600. 3,600. 3,600. इसका ना द लॉजिक इज सम परसेंटेज ऑफ दिस सीबीटीसी विल बी व्हाट? टैक्सेबल. सो लॉजिकली ना बहुत सारे बुक्स में ऐसा भी रिटर्न है. आ जाओ जरा. व्हाट डज द लॉ से? सीबी रिसीव्ड मल्टीप्लाइड बाय एएनआई माइनस 50,000 डिवाइड बाय 100. आ जाओ जरा. व्हाट इज द लॉजिक ऑफ दिस बताता हूं. हाउ मच इज द एएनआई इन योर केस? टेल मी. 53,000 डिवाइडेड बाय, और एएनआई minus 50,000. Correct. एक मिनट. I'll shift it on the left. Divided by 100. 53 minus 50,000 divided by 100 means, sir, every 100 pounds पे 1% of CBTC will be paid back to the government. So calculate how much is this.
और इसको ना परसेंटेज है, ये परसेंटेज है. So 53,000 minus 50,000 divide by 100. Whatever answer you are getting, that should be the percentage. Tell me how much is the percentage. कितना परसेंट है? 53,000 minus 50,000 by 100. Whatever answer is a 30 percentage. कितना? 30 30%. So 3,600 का 30% will be repaid back to the government as tax. बोलो, how much is that? How much is that? बोलो. 1080. 1080 So how much is the total tax liability? ये दोनों प्लस 1092 और 10,740 and then 12,912 सर 1092 कैसे आ रहा है और ये जो आपने 53,700 लिखा है? हाँ 53,700 ही आया ना. ये एक्सटेंशन ऑफ बैंड्स किया ना मैडम 16,000 अच्छा, हाँ ठीक है इस सर. वजह से, because of the extension of bands. Now what is the law saying? First time have you seen something like this? Tell me कि percentage कुछ something you calculated something 53,000 minus 50,000 correct, divide by 100, 30% is calculated. Have you seen any type of calculation anywhere? This type of calculation anywhere have you seen? Honestly tell me. फिर ये So it नहीं is, हाँ ये नहीं में ऐसा कुछ था ना सर, हाँ तो ANI में था, but how what was ANI? Tell me. It was reduction of ANI. The amount was calculated, correct? Same ANI में, but here what it is saying, no, sir, the ANI that is above 50,000, right? Or between 50 and 60, how much it is above 50,000? Calculate that. So let's say 53,000, 3,000 I am above. So for every 100 pounds above 50,000 that you have in your ANI, again I am repeating, every 100 pounds that you have above 50,000 in your ANI will be 1% repayment of CBTC. So you are getting 3,600. Now tell me, why are they getting you or making you repay this? Ye socho. Think about it. Why are you or why is the government making you repay this? See, government is giving money to only couples, right, who have kids and are not able to take care. See, when you have an income less than or ANI less than 40 or 50,000, in that case, it shows that logically you have to take care of the child and you need money to take care of the child. Correct or not? You are not that high, what, background or high financial background parents, correct or not? And hence you need support from the government. So government does not ask for the child benefit back. But if you are earning 200,000 or more than 60,000, what is the government saying? Tell me. Earning kya? If you have ANI more than 60,000, in your hand if you have 60,000 or more, after deducting all what? The things, then do you even what? Tell me. Need a child benefit or you can take care of your child? Tell me. You can take care. So even if any government is paying you child benefit, so repay back what? Tell me that child benefit. If you have income above 60,000. What do you say? Makes sense? And if you have income between or ANI, not income but ANI between 50 and 60, then for every 100 pound, repay back 1% of the what? CBTC. Make sense? Chaya, what do you say? Labdi, what do you say? सप्तांशु क्या लगता है? अविनाश, ठीक है सर. okay, makes sense. But there is one catch at the end, correct? आ जाओ. एक different type of question that has come up in exam, right? What is that question? Both spouses more than 50,000 but less than 60,000, correct? This is a very interesting question, right? Write down example, correct? Mr. A and Mr. B.
Mr. and Mr. B are spouses and receive for 2,725 pounds child benefit for tax year 24-25. अब आराम से टैक्स ईयर 24-25. Mr. A has salary income of 54,000 pounds, right? Mr. B has salary income of 58,000 pounds. Correct. No GPPC, GGAD, nothing. Correct. Calculate tax liability. Avi, what will you do? Tell me. How much is net income? How much is ANI of Mr. A? And how much is ANI of Mr. B? No GPPC, GGAD. 54 and 58 will only be the total income. 54 and 58 will only be. मतलब एक minute. If I do Mr. A, side by side I'll do. Okay. Mr. A. Can I directly write Mr. A का net income? Correct. From NSI is how much? 54,000. Correct. Mr. B, बोलो net income NSI 58,000 pounds. Correct. Okay है, right? एक 54, एक 58, right? Minus PA in both, right? For PA, right? You will have to do ANI calculation. So ANI is equal to what? NI. SGPPC, GGAD is not there. That is equal to what? बोलो. ANI is equal to NI is equal to what? 54,000, Mr. M, right? And ANI is equal to NI is equal to 58,000 in what? Tell me, Mr. B's case. So PA available in both scenarios, 12,570 बराबर है माइनस PA यार 12,570. इसमें anyone having any problem? Tell me. Taxable income. Tell me. Taxable income is how much रे बाबा? 51,430. And इधर कितना आएगा? Tell me. 58 minus 12,570 कितना होगा? ये भी आई थिंक 51 नहीं 41,430 होगा ना 41,430 41,430 is एंड इधर 44,430 बराबर है क्या 44 नहीं सॉरी 45 ना 45. 45,430. नाउ माय क्वेश्चन टू यू एक मिनट इज CB और चाइल्ड बेनिफिट रिसीव्ड और नॉट रिसीव्ड फर्स्ट टेल मी दैट चाइल्ड बेनिफिट रिसीव्ड है और नॉट रिसीव्ड व्हाट डू यू से लवदी व्हाट डू यू से बेटा child benefit received or not received? Tell me. Pranav, what do you say? Received. Received. And tell me, are both spouses having income between 50 to 60? देखो ना, one is having 54,000, one is having 58,000. So are both spouses having income between, देखो CBTC, any spouse बोला है having ANI, but are both spouses having ANI between 50 to 60? Yes. अभी in this case what you will do? चलो एक मिनट टैक्स कैलकुलेट कर लो राइट डाउन टैक्स 0 to 37,700 at 20%, correct? 7,540. Then 41,430 minus 37,700 to 40%. Right, either be 7,540
same thing. बाकी का टैक्स कितना है बताओ. 41,430 minus 37,700 into 40%. How much is that, Baba? 1492. 1492. करेक्ट. इधर कितना है बाबा? 45,430 minus 37,700 into 40%. बोलो. 3092. 3092. ठीक है. But now, where will CBTC come and what will be the calculation of CBTC? ये बोलो. Should I calculate CBTC on 58,000? Should I calculate CBTC on 54,000? Is my question. What do you think? क्या लगता है सप्तांशु? What should we do? 58,000. 58,000. Why 58,000? देखो जरा, मैंने एक नोट लिखा है इधर. Is the note visible to you? What are the two notes? Read them. Now tell me what is your answer. बोलो. Read the notes. The spouse with higher ANI will pay CBTC, right? And while considering threshold of ANI, use the ANI of spouse having higher ANI. मतलब will you choose 54 or 58 for threshold calculation? 58. 58. And who will pay the tax or CBTC tax charge? The spouse who's having higher income. So should I write, एक मिनट, इधर plus CBTC लिखता हूँ. Both spaces I will write plus CBTC. Here also I will write plus CBTC. Correct? But here I will say dash. Here I will do the calculation. Should I do 58,000 minus 50,000 or 54,000 minus 50,000? So how much is CBTC received? Tell me. 2725. 2725 multiplied by, क्या करूं बोलो, ब्रैकेट ओपन. What should I multiply it by? 58 or 50? बोलो. What minus what? Go back. Here are table. देखो, इसलिए टेबल इंपॉर्टेंट है. व्हाट इज द टेबल से? सीबी रिसीव्ड मल्टीप्लाइड बाय व्हाट? एएनआई माइनस 50,000. मतलब क्या करना पड़ेगा इधर? टेल मी व्हाट वी हैव टू डू हियर. व्हाट माइनस व्हाट? टेल मी. 58,000 minus 50,000. The whole divided by 100 percentage. Tell me how much is the percentage? 2725 into how many percentage do we have to do? Tell me. 80%. 80%. So 2725 into 80% is repaid back to the government. So how much will be repaid? Extra tax charge that will be there. Tell me. 2725 into 80%. बोलो. 180. कितना? 2180. 2180. हाँ सर उतना ही है. ठीक है. So how much is the total tax now? Tell me. Total tax payable. 12,812. Make sense or does not make sense? Tell me. एक सेकंड ना. So is it okay? कोई problem? Interesting. Have you ever seen anything like this? If you have studied Indian income tax or even UK tax, right?
the detail at which you know now CBTC. Is it okay? See, every example has to be done in class. If you don't do the example in class, is there a use? Tell me. Hello. Makes sense? Does not make sense? Tell me. Okay. You want a break or no? See, this is interesting. ठीक है. तो यू में फील, अरे कितना मजा आ रहा है. करेक्ट. बराबर है क्या? देख लो. कैन आई गो हेड और यू वांट अ ब्रेक? ब्रेक। ब्रेक. चलो ले लो ब्रेक. ऑलमोस्ट 9:36, 9:54 AM तक आ जाओ. 9:56 तक आ जाओ. चलो.
चल everybody back. Am I audible, visible? Yes. Quickly join in. आ जाओ, सीबीटीसी का एक होमवर्क है. हैव अ लुक. More questions can I get from CBTC? Is my question. From the exam kit, can I give you questions? चलेगा होमवर्क में? नोट्स में कॉपी पेस्ट कर दो सर. हाँ, नोट्स में कॉपी पेस्ट कर दो अगर किट वही से कर रहा कोई हूँ, क्वेश्चन. वही कर रहा हूँ, वही कर रहा सर, हूँ. हाँ, कैप्लन किट में एक जो चाइल्ड अलाउंस का फॉर्मेट दिया है ना, उसमें हाँ, किट नहीं, सॉरी, टेक्स्ट बुक में दे हैव हाँ. टोल्ड कि फॉर एवरी 200 पाउंड इनकम 1% लेना है. एक मिनट रुक जा भाई. कुछ गड़बड़ हो गया क्या? चेंज हो गया क्या सीबीटीसी? शायद से न्यू, अभी 24 एक में. बार देखने दे. रुक जा. आ जाओ. इज द हाँ, 60,000 और 80,000 हो गए. तो उसको थोड़ा चेंज कर देते हैं. कोई टेंशन नहीं है. अपने एग्जाम्पल में कोई फर्क ज्यादा पड़ेगा नहीं. आ जाओ जरा. तो सर, इंस्टेड ऑफ 100 डिवाइड बाय 200. डिवाइड बाय नहीं, दो चीजें चेंज हुई है. आ जाओ, एक मिनट. मेरा ये रह गया क्या चेंज लिखना? आ जाओ जरा. 80,000 इधर लिखता हूँ. करेक्ट. राइट. खाली चेंज कहाँ होगा? एक सेकंड के लिए ये क्वेश्चन में आते हैं. ये वाला क्वेश्चन. करेक्ट. ये वाला पहला और दूसरे में चेंज नहीं होगा. थर्ड और फोर्थ जो है इसमें चेंज होगा. डिवाइड बाय 100 की जगह पे आ जाओ जरा. देखो सीबीटीसी में क्या दिया हुआ है. 60 एंड 80 है. बराबर है. बिटवीन 60 एंड 80. जो 50 एंड 60 था, अभी 60 एंड 80 हो गया. सॉरी यार, मेरा रह गया क्या कैसे ये चेंज करना. एक मिनट, इधर चेंज कर देता हूँ. लेस देन 60,000 और बिटवीन 60 एंड 80. ठीक है. तो ANI माइनस 60,000 होगा. मैं चेंज करवा देता हूँ, आप उतना चेंज कर लेना. कोई प्रॉब्लम नहीं. करेक्ट. हाँ, तो ये फिर थोड़ा चेंज हो जाएगा क्वेश्चन. इधर क्या करो. एक सेकंड. 79,000 कर देते. 79,000 इधर करो, मैं करवाता हूँ. ठीक है. 79,000 करो. ऐसे ही आंकड़े चेंज करो. ये 53 के जगह 63,000 आएगा क्या? देख लो एक बार. इधर सर, 79. डिनोमिनेटर भी चेंज होगा ना? हाँ हाँ, करता हूँ ना. पहले तो नेट इनकम तो चेंज कर रहा जा. करेक्ट. चले. कर दिया. इधर कितना चेंज होगा बताओ मेरे को. 79,000 में से 112,570 माइनस हो गया. बोलो कितना बचा. देख लो ये कितना बचा. देखो ये वाला क्वेश्चन कर रहा हूँ, बिटवीन वाला क्वेश्चन है ना. अब ये बिटवीन 60 बट लेस देन 80. माय मिस्टेक. मैंने चेक किया था, मेरे को लगा मैंने चेंज कर दिया था. कोई बात नहीं. बिटवीन 60,000 एंड 80,000 ये ना है. खाली अमाउंट चेंज हुआ है और डिनोमिनेटर चेंज हुआ है. ठीक. चलो आगे क्या. 79,000 कर लिया आपने. ये 63,000 हो गया. ये टैक्स लायबिलिटी चेंज करो. कितनी आएगी? कितना है 79,000 माइनस 12,570, बता दो कितना होगा. 79,000. 69 का 79 कर दो खाली. एंड चेंज 66 द 430. 66 430. और 30 पाउंड. करेक्ट. दिस एक्सटेंशन इज ओके. 0 to 53,700 ये तो सेम रहेगा. 53,700 है. 20% कितना होगा? सेम होगा. 10,000 कुछ निकाला था ना आपने. 10,740. 10,740.
पाउंड्स, और ये हो जाएगा 56,430 की जगह पे 66,430 माइनस 53,700 इंटू 40%, कितना आएगा बोलो? 66,430 माइनस 53,700 इंटू 40%, डबल हो जाएगा पहले जो अमाउंट थी उसके। 5092। 5092। अब खाली यहाँ पे क्या है आपका, अभी 63,000 का सीबीटीसी है। 63,000 माइनस 60,000 डिवाइड बाय 200 करो, ये इतना खाली एक अमाउंट पूरा चेंज होगा कट करके। तो ये कितना परसेंट आया? 100 की जगह पे एवरी 200 पाउंड है, बराबर है 3,000/200, आई थिंक 15% होगा। तो 3,600 इंटू 15% कितना होगा? 540 के आसपास। कर लो, टैक्स लायबिलिटी चेंज हो जाएगी। बताओ कितनी है? ये समझा करे छाया? यस सर। द ओनली थिंग दैट हैज चेंज, ये चेंज करना कैसे रहेगा? माय मिस्टेक, गड़बड़ हो गई होगी, ठीक है, एक्सट्रीमली सॉरी। ठीक है, सर वो तो लेस देन 50,000 वाले में भी कोई नहीं, लेस देन 50,000 में लेस देन 60,000, करेक्ट। आ जाओ अच्छा। जरा एक मिनट, चाइल्ड बेनिफिट टैक्स चार्ज, आ जाओ जरा एक मिनट। हाँ, 60 to 80, राइट, 1% फॉर एवरी 200, ठीक है। तो 50 की जगह पे 60, बराबर है, और 60 की जगह पे 80। टेबल एक बार फिर से रिफर कर लो, एक्सट्रीमली सॉरी, रह गया अपडेट करना। थैंक यू प्रणव, करेक्ट, देख लो, ओके है क्या? ये हर साल बहुत चेंज करते हैं क्या सर? ये सीबीटीसी आई थिंक अभी 3 साल बाद चेंज हुआ है। 50 to 60,000 ही 3 साल से चल रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको? 54 की जगह 64 करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चेंज होगा 64, 51, 68, 54, बराबर है। तो ए एन आई तो 68, 64, इधर ही आएगा 68,000 माइनस 60,000, बाकी सब कुछ इधर 10,000, खाली क्या चेंज होगा? पे टैक्स लगेगा 40% पे, 400 इधर ऐड कर दो एक्स्ट्रा, 40%, 4,000 और ऐड होगा यहाँ पे टैक्स में। ये आप होमवर्क में कर सकते हो, ठीक है। खाली सीबीटीसी देख लो, डिवाइड बाय 200 करेंगे तो इधर 68,000 माइनस 60,000 डिवाइड बाय 200, यानी 40% आ जाएगा। तो 2725 इंटू 40% कितना है बाबा, बोलो? 1090। 1090, इतना चेंज होगा और टैक्स लायबिलिटी चेंज होगी। आपके लिए एक और क्वेश्चन हो गया होमवर्क के लिए, ठीक है? ठीक है क्या? देख लो, हल्का सा ट्विक कर दो, एक्सट्रीमली सॉरी, ठीक है। चल आगे बढ़ते क्या? हाँ, अब आ जाओ, एग्जाम किट में से हमको क्वेश्चन दिखते क्या, आ जाओ। सीबीटीसी के क्वेश्चन एग्जाम किट में से, विच आई कैन गिव यू फॉर होमवर्क। ये वेन दे दिया ना मैंने, जीना ऑन वेन आपको क्वेश्चन होमवर्क यस। में। यस सर, वो हो गया। ये रहा 1/10 क्वेश्चन, 66,200, ये रहा होमवर्क में। ठीक है,
हाँ, इधर आपको खाली अमाउंट ढूंढना है। मेथड ऑफ कलेक्शन के बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है। कल मेथड ऑफ कलेक्शन के बारे में बात करेंगे। आपको अमाउंट ढूंढना है, ठीक है। वेदर इट इज 1770 और 1438, ठीक है। यू हैव टू फाइंड द अमाउंट। हाँ, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। रिलेटिंग टू क्यूआईपी, अच्छा क्वेश्चन है। ट्राई कर सकते हैं आज। आई हैव गिवन द टेबल, यू कैन ट्राई। करेक्ट। इनेस का भी क्वेश्चन आपको दे दिया। डेविड ऑल्सो आई गेव यू डिविडेंड इनकम 16th, सेविंग्स इन रिस्पेक्ट ऑफ गिल्ड्स। अभी ये गिल्ड्स का ही करना है अपने को। दिस 2-3 क्वेश्चन ऑन गिल्ड्स। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, मिरेंडा, फर्निश्ड रूम। अभी आई थिंक नाउ फ्रॉम ईयर ऑनवर्ड प्रॉपर्टी इनकम शुरू हो गया। ठीक, चलो, ओके। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। आप सारे क्वेश्चन चाहिए तो रीडू कर लेना, ये तीनों। तो एक तरीके से 60 to 80 कंसिडर करके यू कैन रीडू ऑल द क्वेश्चन। टेल मी, चलेगा? ऑल क्वेश्चन यू कैन रीडू। आ जाओ। सबसे पहले, व्हाट आर द इनकम्स दैट आर टैक्सेबल एज सेविंग्स इनकम? बराबर है। टैक्सेबल पार्ट है बैंक इंटरेस्ट, बिल्डिंग सोसाइटी इंटरेस्ट, इंटरेस्ट फ्रॉम गिल्ट एज्ड सिक्योरिटीज, यानी कोई अगर बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट आता है, टैक्सेबल एज सेविंग्स इनकम। बिल्डिंग सोसाइटी मीन्स व्हाट? इन इंडिया वी हैव दैट कोऑपरेटिव बैंक सिस्टम। टेल मी, याद है क्या आपको? कोऑपरेटिव बैंक सिस्टम्स। Yeah. कोऑपरेटिव बैंक्स मीन्स, इंडिया में कोऑपरेटिव बैंक, दैट ओनली मीन्स इन यूके व्हाट? बिल्डिंग सोसाइटी इंटरेस्ट। करेक्ट। So if there is any cooperative bank or cooperative societies where you keep some deposit, उस पे what? Tell me. Interest will be taken care of. Then interest from gilt-edged securities. Interest from gilt-edged securities means what? Tell me. Government-backed securities. What are government-backed securities? Can you tell me? अगर यूएस में कंसिडर करो, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट, अब आई हैव अ डाउट, करेक्ट, whether it is strongest what? Tell me. Government bank security. You know the US treasury bills? Tell me. Yeah, treasury bonds as they call it, Yes. right, are one of the safest investment is what they say in the world, correct. But right now, looking at how Mr. Trump is working around with those things, I don't feel too much secured, correct. Then, if you have any interest from quoted company loan stocks, quoted company means what? Listed company bonds or debentures. On that, if you receive any interest, taxable. Now, here, no, there is a very peculiar thing. Come to the exempt part, correct? Interest from NSI certificate. What am I saying? NSI certificate. There is another particular that is asked here in the taxable part. I would like to add, right? Interest from NSI account, that is national savings एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट बोल के भी है, करेक्ट. So there are two particulars, right? One is interest from national savings and investment account. Account means what? You go to the bank and you open a national what? Savings and investment account. बराबर है क्या? क्या हो गया भाई? National savings and investment account. Other is you could buy a certificate which is a national savings and investment certificate. So UK government motivates you to invest in both these accounts. But when you buy a interest or interest from non-savings investment certificate, correct, you get interest. So I took give money and took a certificate, correct, and I'm getting interest on that. That is exempt. But if I go into the bank and open a national savings and investment account, and on that if I'm getting any kind of what? Interest, is that taxable or tell me? Exempt बोलो. Fully taxable. Account fully taxable. मैं क्यों बोल रहा हूँ? There is an MCQ here. आ जाओ जरा.
एटलीस्ट इधर तो है। करेक्ट। हाँ, इधर ही ले लेते हैं नीचे। ठीक है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आइडेंटिफाई बाय टिकिंग द अप्रोप्रिएट बॉक्स द ट्रीटमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेविंग्स इनकम। NSIC अकाउंट इंटरेस्ट टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट? टेल मी, बोलो। अकाउंट का इंटरेस्ट बोलो। टैक्सेबल। टैक्सेबल। गिल्ट एज सिक्योरिटी इंटरेस्ट। गिल्ट एज सिक्योरिटी मतलब क्या? गवर्नमेंट बैक्ड सिक्योरिटी का दूसरा नाम क्या है? दे कॉल इट गिल्ट एज्ड सिक्योरिटीज। दैट मीन्स गवर्नमेंट बैक्ड सिक्योरिटीज, टैक्सेबल। बट एक्सेप्ट। व्हेन इट कम्स टू NSNI सेविंग सर्टिफिकेट इंटरेस्ट, टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट? एग्जाम। एग्जाम। एग्जेम्प्ट। ओके विथ इट? सबसे वन वर्ड that every student forgets in the exam part, what is it? It is very difficult to remember. A lot of you forget this for sure. Difficult to remember. 100%. So I would say when you learn this, ये सब याद रह जाता है. बैंक सोसाइटी, बिल्डिंग सोसाइटी, गिल्ट एज. बिकॉज गिल्ट एज वी आर गोइंग टू व्हाट डू अ क्वेश्चन. कोटेड कंपनी लोन स्टॉक भी ठीक है. इट इज अ डेट, सॉरी योर बॉन्ड्स और डिवेंचर्स, उसके ऊपर का इंटरेस्ट ऑल्सो you try to keep it in mind. But when it comes from as interest from national savings and investment account and certificate, ये दो है, these are different, ऐसा बोल के भी याद रहता है. But the one thing that everyone forgets is what? Tell me. Premium bond winnings. So it is basically some kind of what? Bonds on which you get a bit of what? Lottery winnings kind of stuff, right? So you get premium. Premium means what? Bond पे premium means on your redemption you get certain premium. देख लो, ओके है क्या? This is one thing that everyone forgets. Generally, I have seen students forget premium bond winnings. Correct? सर देख लो. NS&I इज अ प्रॉपर इन्वेस्टमेंट, क्या है Yes. मतलब वो? हाँ, वो like India has what? We have RECL bonds, right? Rural Electrification Corporation Limited, right? We have NHAI bonds, National Highway Authority of India bonds, correct? Where government backed, अभी ये जो सब मैं बोल रहा हूँ are all gilt edge securities, government backed securities, right? But if you now see whether you know it or not, right? ये जो NS or rather in India NHAI bonds, if I sell a property, right, and I invest into that bonds, that capital gain is completely exempt, right? India में वैसा है. But here what they're saying, if you buy a certificate, national savings and investment certificate, if you buy, right, which is a, you give loan to the what? Tell me. Government, correct? Government will pay you interest. That interest is completely exempt. बराबर है क्या? देख लो. Any problem? This MCQ okay has come up. अभी तक has not come up in exam, but you never know. आ जाओ जरा एक क्वेश्चन. First note, savings income and dividend income will be taxed on what basis? Receipt basis and accrual basis. I have not given that in the notes, but tell me, is there a difference between a receipt basis and accrual basis? What do you mean by receipt basis and what do you mean by accrual basis? Can we talk about it a bit? बोलो, इधर ही बीच में. Let us have that because it is going to help us going ahead as well. Receipt basis. Receipt. You have a question, don't worry about the question. Versus accrual basis. Correct? चले क्या? Tell me. Receipt basis means what? Types of account or type of accounting method बोलना चाहिए. You don't need to write this. You just have to read this. ठीक है? Not important from what? The portion per se, but you need to know what is receipt basis. Correct? And what is accrual basis. सर रिसिप्ट बेसिस मतलब जब रिकॉर्ड करना जब हमारी इनकम आई है, और एक्रूअल मतलब जब सेल हुई है तब भी हम लोग रिकॉर्ड कर देते हैं. करेक्ट, परफेक्ट, करेक्ट. एक बेटर एग्जांपल देता हूं. आपने जो एग्जांपल दिया बढ़िया,
राइट। मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, एग्जांपल, करेक्ट। कंपनी ए हैज पेड इंश्योरेंस फॉर द पीरियड, आने वाला है आगे, आई एम जस्ट पुटिंग अप फॉर द पीरियड फ्रॉम 1/06/2024 टू जून, है ना, तो 31 मई 2025 ऑन 1 जून 2024, अमाउंट इज 2400 पाउंड। रिसीट बेसिस और पेमेंट बेसिस, जो भी बोलना है आपको, रिसीट और पेमेंट बेसिस, बोथ द वर्ड्स आर ओके विथ मी, ठीक है। अमाउंट इज 2400 पाउंड, ठीक है। आ जाओ, अब इस केस में हाउ मच इज द एक्सपेंस दैट यू विल गेट। एक्सपेंस फॉर टैक्स ईयर 24-25 एंड टैक्स ईयर 25-26, इस केस में you will get full 2400 expense on the date you have paid, वो टाइम पे full expense you will get, at that time only you will get the full expense. But when it is accrual basis, if I put the same question, correct, इधर ऐसा accrual basis, answer as of accrual basis, correct. How will that be? Have a look. In tax year 24-25, what is the period of insurance covered in tax year 24-25? Tell me. 1/06/2024 to अभी 31 मार्च 2025 लिखो, चलेगा? How many months are covered here? Tell me. In 24-25, tell me how many months from year to year? How many months? June, July, August, September, October, November, December, January, February, March. How many months? How many months? June to March end. How many months 10 covered in months. tax year? 10 months. So logically what will be? Sir, 2400 into 10 by 12, that is how much? निकालो जरा, कितना आएगा बाबा, कितना? How much will be there in 24-25? बोलो. 2000. 2000 pounds. But when it comes to tax year 25/26, how much will come in 25-26? Logically 104/25 to 31/05/25. So how many months will come here? Tell me. 2 months. April, May. So 2400 into 2 by 12 कितना हो जाएगा? 400. So sir, if it is receipt basis, correct, if you will look at the date of receipt or payment, right, so your date of payment is in which year? Tell me. बोलो. 24. Paid in 24-25. So the full 2400 allowed in 24-25. But in accrual basis, will you look at the date of payment or will you look at what? For what period is the insurance paid? Tell me. Where will you look at? You will divide your expense. समझ में आया क्या? छाया, what do you say? Whatever you said, उसी का what did I do? Tell me. Yes, Live sir. example. Make sense? So now, एक minute. So whenever you have any savings income that is there, Aja Zara, is the question visible to you? Mr. A holds what? Investment already of $10,000 on which it gets 50 or 5% per annum. Interest payable on 10th of next month after quarter end for every quarter. Means एक quarter का first quarter that is there, right? उसका interest will be payable next month के 10th को. Calculate the interest taxable in the hands of मिस्टर ए, अभी मैंने इधर 23-24 दिया, एंड प्रोवाइड डेट ऑफ टैक्सेशन अज्यूमिंग मिस्टर ए होल्ड्स द इन्वेस्टमेंट सिंस 2020. करेक्ट है? अभी टैक्स ईयर 23-24, आर यू ओके विद द पीरियड? टेल मी.
You have to see within this period how much interest is payable. अब देखो, starting from 6/04/2023, correct? यानी अप्रैल, मई, जून, दिस इज द फर्स्ट क्वार्टर. जून का पेमेंट व्हेन विल इट हैपन? टेल मी, बोलो. जून तक के क्वार्टर का पेमेंट व्हेन विल इट हैपन? टेल मी. रीड दिस. ये वाला रीड करो. रीड इट. बोलो बोलो. तो इन्वेस्टमेंट के आगे का वर्ड क्या है? किधर है बेटा? इधर. What's ऑलरेडी in- investment already of $10,000 on which it will get 5% per annum. Interest payable on सर 10th जो next month. हाँ, क्वार्टर हर क्वार्टर के जो नेक्स्ट मंथ पड़ेगा उसकी क्वार्टर 10th को खत्म है। होगा, उसके नेक्स्ट हाँ मंथ में 10th को पेमेंट होगा. 10th को करेक्ट. होगा, हाँ मीन्स, एक मिनट, इफ आई से 6/04/23, राइट, यानी अप्रैल, मई एंड जून, दिस इज द फर्स्ट क्वार्टर. हाँ उसके बाद वाला नेक्स्ट मंथ जो है जुलाई, उसके 10th जुलाई, से 10th होगा. ऑफ जुलाई, 10th तो जुलाई फर्स्ट होगा फिर। फर्स्ट so 10,000 into 5% into 3/12, every quarter you will get how much? 125 pound. बराबर बोल रहा हूं? देख लो. तो अप्रैल, मई, जून, बराबर है. 10th जुलाई को पहला पैसा मिलेगा. करेक्ट? एवरीबडी ओके विद दैट? क्या लग रहा है प्रणव? डज इट मेक सेंस? ऑन 10th ऑफ जुलाई यू विल रिसीव. करेक्ट? तो इज दैट 10 जुलाई 2023 विद इन टैक्स ईयर 23-24? Yes. Then July, August, September, when will you receive second quarter का money? Tell me. October 10th. अक्टूबर को. बराबर है. देख लो. Is October 10th 2023 covered within tax year 23-24, बाबा? Tell me. Yes. Okay. Then October, November, December you will get on 10th January 2024. Is 10th January 2024 covered in tax year 23-24? बोलो. Yes. Yes. Then जो जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 months, when will you receive this? 10th April. 10th April. Is 10th April 2024 within tax year 23-24 or will it go to 24-25? Tell me. 24-25. बराबर है क्या? देख लो. This is what I'm trying to say. Understanding what I'm trying to say? Tell me. तो सर अकॉर्डिंग टू रिसीट बेसिस वो नेक्स्ट ईयर के टैक्स में आएगा, लास्ट वाला 120. Obviously, yes, 27 or 24-25 में. Correct? Understanding? What do you, छाया, क्या लगता है? On the date you receive the interest, it will be taxable on that date. Correct? क्या लगता है? सर लास्ट पेमेंट में अगर अक्रूवल होता है हाँ. But see, you cannot switch accrual to what? Tell me. ओके. हाँ. But अगर accrual होता, if they were accrual, then all the 4 payments would have been in which quarter? Tell me. देखो इधर अगर मैं लिखूं on accrual, तो everything would have been where? Tell me. On accrual, full 125 into 4, right, would be taxable in tax year 23-24. बराबर है ना बेटा? क्या लगता है छाया? यस सर। सप्तांशु, बेटा क्या लगता है? What do you think about it? 125 into 4, 500 pounds. It would be taxable fully in tax year 23-24. Makes sense? Does not make sense? Tell me. What do you say, guys? सर वो लास्ट जो 10th अप्रैल वाला है हाँ. उसका क्या होगा? सारा इन ना. See, accrual if it basis. is एक मिनट accrual में what you will see that अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, फुल 12 महीने. डिड यू हैव द इन्वेस्टमेंट देयर? यस. So without asking anything, 10,000 into 5% into 12/12, you will accrue it. Whether you receive it or you don't receive it, will you accrue it? Yes. So full 125 into 4, 500 pounds will be what? Accrued. Tax year 23-24. So accrued says what?
Accrued is based on time basis, correct? And receipt or payment basis is based on what? The date of receipt, or wherever the date of receipt or payment falls, in that year it will be taxable. Okay. ठीक है, अंडरस्टैंड? लेकिन दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट. आगे चलो क्या, ये अक्रूवल पे तो नहीं है, राइट? तो आई हैव डन दिस ऑन अक्रूवल, बट ठीक है, यहां तक ओके है क्या आपको? चलो चलो आगे. पहले एक आय से कर लेते, राइट? फिर आई विल कम टू व्हाट, दिस इंटरेस्ट. नहीं तो चलो इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स आ ही जाओ. चलते क्या? नाउ सी, आई हैव टोल्ड यू व्हाट, सेविंग्स इनकम इज टैक्स्ड ऑन रिसीट बेसिस, दैट इज रिसीट और पेमेंट बेसिस, और ऑन अक्रूवल बेसिस. पहले ये बताओ, रिसीट बेसिस या अक्रूवल बेसिस इंटरेस्ट? वापस पढ़ो, इधर आ जाओ. receipt basis. हाँ, सेविंग्स इनकम और डिविडेंड इनकम आर टैक्स्ड ऑन व्हाट बेसिस? टेल मी. रिसीट बेसिस। रिसीट बेसिस, ये भूलना मत, ठीक है? चलो, राइट डाउन हेडिंग इन योर नोट्स, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और गिल्ट्स. बहुत ही ज्यादा, राइट? You ask anyone, any faculty, if they can teach you this without any friction, right? They are a great faculty. मैं क्यों बोल रहा हूं, ठीक है? दिस हैज हैपेंड सो मेनी टाइम्स, करेक्ट, दैट स्टूडेंट को ये समझ में ही नहीं आता है. क्या लगता है प्रणव? आया है? यू इवन नो दिस इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट एंड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, गिल्ट्स, किया है क्या? अभी अभी तक वो टॉपिक नहीं किया। नहीं किया ना. सेविंग्स इनकम में आए नहीं, बट ये पहले करना पड़ता, उसके बगैर आगे जा ही नहीं सकते आप, ठीक है? Yes. हाँ, शायद हो सकता है कि फॉरेन, क्या है आपका रेसिडेंशियल स्टेटस, कुड हैव बीन डन फर्स्ट, राइट? बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, करेक्ट, एंड इजी भी है. इफ यू डू इट वंस, करेक्ट, इजी. यू से, ये टेबल इधर मैं दे रहा हूं, ठीक है? टेबल रिफर फ्रॉम नोट्स, चलेगा? इसका टेबल बनाते क्या प्लीज? बना लेते क्या फट से? 2 मिनट लगेंगे, ये समझ में नहीं आएगा विदाउट टेबल. लिख लो पहले, लिख लो. आई गिव यू 2 मिनट्स, राइट इट डाउन. इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट एंड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और गिल्ट्स, लिख लो, बिकॉज दिस इज अ बिट डिफिकल्ट टू रिमेंबर. इसमें वी आर गोइंग टू यूज टाइमलाइन अप्रोच. एक सेकंड, आप लोग लिखो, मैं आया 1 मिनट. चलो चले. Once you're done writing, tell me.
चलो लिखो लिखो. This is a bit technical, right? If you don't understand this, then you will not understand it ever. If you understand it, then you will not forget it easily. हो गया तो बोलो. डन बोल के. Then I can go ahead. यस सर, हो गया. हो गया. एवरीबॉडी. सप्तांशु क्या लगता है? हो गया सर. हो गया. चलो आगे. अब एक एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल लिखो इसके नीचे. ठीक है. चल आ जाओ. मिस्टर ए परचेस्ड गिल्ट्स ऑन 1/04/2024 for £15,000, which have nominal value £10,000, interest payable quarterly from or quarterly at end. इंटरेस्ट रिसीवेबल होना चाहिए at end of each quarter at 7%. एक मिनट. ठीक है. 7% नहीं, 7% मतलब एट 8% पर एनम. थोड़ा कैलकुलेशन के वाइज इजी हो जाना. करेक्ट. At end of each quarter at 8% per annum. That is 30th June, July, August, September, 30th September, 31st December, and last but not the least, 31st March. ठीक. Calculate interest taxable in the hands of Mr. A
for tax year 24-25. इसी क्वेश्चन को, दिस इज फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, राइट डाउन समवेयर फर्स्ट पार्ट. I am going to continue this ahead, right? So this question only I will consider or continue it ahead. Chalo. Tomorrow your property income will start. Huh? First only I am telling you. Property income will start from tomorrow. Tomorrow probably most of property income will also be done. Day after tomorrow, that is Thursday, probably employment income. I have told you that way only, no? एक बार जाते क्या? What is the? Did I give you how I will do it? Sequence have I given you? यस I सर, have given you. लिखवाए थे आपसे. हाँ, तो अभी 2, 3, 4 बेसिकली. नाउ कम टू दिस एग्जाम किट. स्टडी टेक्स्ट में आ जाओ. एक ही सेकंड ना. Logically, we are done with basic income tax computation. We are done with income tax additional aspects. 2 and 3 we are done almost. Once we are done with this, ठीक. Then property income is there. So tomorrow we start chapter 4. Okay. I just want to be, we have to be on the same page. Correct. इधर लिख दो क्या आगे chapter 2 and 3. इधर in this book इन्वेस्टमेंट इनकम बोल के देयर इज नो डिफरेंट चैप्टर, नो. इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग्स इनकम बोल के आई थिंक दे हैव कवर्ड इट इन चैप्टर 2 and 3 ओनली. आई हैव आल्सो डन द सेम थिंग. करेक्ट. सर 3 में डाल दिया है शायद वो. ठीक है, वट एवर. 2, 3. सो 2, 3 and 4 राइट इज अ ग्रिड दैट कैन बी डन टुगेदर क्विकली. पीए हो गया, सीबीटीसी हो गया, एमए हो गया. करेक्ट. राइट. चलेगा. हाँ. सो नाउ व्हाट यू कैन डू इफ यू वांट. ठीक है, इफ यू वांट तो एक बात सुन लो. वंस वी आर डन टुमारो विथ व्हाट और टुडे विथ दिस पार्ट, तो मैक्सिमम पार्ट हो जाएगा. करेक्ट. सो इफ यू वांट 2 and 3 के ऑल TYUs चैप्टर 2 and 3 टुडे वंस वी आर डन, यू कैन सॉल्व ऑल द TYUs ऑफ चैप्टर 2 and 3. ठीक है. या अगर बेटर टुमारो इफ वी कंप्लीट व्हाट टेल मी दिस प्रॉपर्टी इनकम ऑलमोस्ट. नहीं बट एक मिनट, TYU नहीं नहीं नहीं, कल रेसिडेंशियल स्टेटस लेना पड़ेगा. रेसिडेंशियल स्टेटस इज देयर इन चैप्टर 2 and 3. रेसिडेंशियल स्टेटस एंड देन प्रॉपर्टी इनकम. सॉरी नहीं, रेसिडेंशियल स्टेटस विल टेक गुड 1.5 hour. टुमारो फर्स्ट रेसिडेंशियल स्टेटस. सॉरी, एक रेसिडेंशियल स्टेटस का पार्ट बचा हुआ है. आ जाओ. मिस्टर ए परचेस गिल्ड्स लिख लिया गया. नाउ टेल मी logically come to this table. What does this table say? If there is a sale or purchase of bonds between two interest payment dates. Now tell me, is there a purchase or sale? चलो सबसे पहले प्लॉट. When did you buy the what? Tell me. Gilts बोलो. 104. 1 April. Correct. First interest payment was on what date? Tell me. 30th June. 30th June 24. Then 30/09/24. Then 31/12/24. Then 31/03/25. Correct. Okay again. Have a look. Okay. Any problem? Now see the first period of this guilt. Is it full 3 months? First check out. Have you held the guilt for full 3 months or not held the guilt for full 3 months? Tell me. बोलो.
बोलो बोलो. 104.24 to 30/06/24. So full 3 months have you held the gilts or not held Yes. the gilts? Held है? Okay. Then from year to year. Okay. 3 months. And you have received interest for it. Correct? So between the two interest payment dates, come to the right side of the table. You have written this. If there is a sale of purchase, see, if 3 months fully it was not held, right? It was purchased, let's say in May or June. So then this right side of the table would come. Nahi to what? Tell me. Here, what will it be? Tell me 3 months ka. How much interest are you receiving here? 1 minute. Will you receive interest on 15,000 or will you receive interest on 10,000? पहले वो बताओ. 10,000. Everybody, interest will be received on nominal value or on market value of 15,000. Tell me. क्या लगता है छाया? Interest is received on nominal value or on market value? Tell me of the bonds. Nominal Nominal value. Always on nominal value. Somewhere in the note at the top, write down interest on gilts will be received. Interest on gilts will be received on nominal value. Right? तो अब देखो 10,000 into 8% into 3/12. How much will be received on 30th June? Tell me. बोलो. 200. 200 pounds. Correct. 10,000 into 8% here also. Have you held the gilt for all 3 months? Yes. Yes. Correct. Into 3/12. Then from year to year, again 10,000 into 8% into 3/12. All the 4 dates, correct? Will they come within tax year 24-25? So if I say interest income for tax year 24-25 is how much? Can you tell me? Total. How much is the total? All 4 dates, are they within the tax year 800. 24-25? Everybody okay with that? Saptanshu, what do you say? Works? Chaya, what do you say? Okay with it? Yes, sir. करेक्ट. ठीक है. अब इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट लिखो. करेक्ट. Second part of this question. Mr. A sells the gilts for 17,000 pounds fully on 1st of August 2025. Calculate interest taxable on gilts. करेक्ट. एक मिनट ना, इधर लिखो फॉर 17,000 टू मिस्टर बी. करेक्ट. Gilts by Mr. A and Mr. B. इधर लिखो नोट. Mr. B held the gilt for or till the end of tax year 25-26. Till the end of, इधर लिखो for tax year 25-26. इधर नोट लिखो नीचे मिस्टर बी. और अज्यूमिंग भी आप लिख सकते हो. अज्यूमिंग मिस्टर बी द गिल्ट हैज हेल्ड द गिल्ट टिल द एंड ऑफ टैक्स ईयर 25-26. ठीक है. चलो. Now, what does the logic say and what does law say are two different things, correct?
Now tell me, Mr. A में I am drawing this timeline, correct? This is 10424, या मैं ऐसा लिखता हूँ 60424, क्या फर्क पड़ता है? 6425 to 5426, correct? Now after this, Mr. A held from year up to what is the next interest payment date? Tell me, बोलो. 30th June. 30th June 25. So how much will you receive? Is there a purchase or sale between the two interest payment? Last interest payment 30th, 31st March and 30th June. Is there a purchase and sale between here? No, sir. No. No. So 10,000 into 8% into 3/12 is taxable here. बोलो कितना है? 200 pounds. सर बट ये फुल 3 months नहीं है ना. है ना फुल 3 months. 104 से ही पकड़ देखो, पिछले से इस तक है ना. सी, am I concerned about the months? Tell me. Or am I concerned about the payment or receipt date? Tell me. पेमेंट. Payment date, यानी जो रिसीट हुआ वो. But after this, did you hold it to next interest payment or next interest receipt date क्या है? 30/09/25. Did you hold the gilts up to that date? Tell me. No. No, sir. But you sold it here, तो इधर 30/08/25, correct? You sold it. So you held for how many months from last interest payment dates? How many months? 2 months. 2 months. 2 months. But now hear me out. अभी कुछ मत करो, ठीक है? Leave some space, 4-5 lines below here, and then draw timeline. This is timeline for Mr. A. This is sold, correct? And this is timeline for Mr. B. 1/4/25, correct? उसको 30/06 he did not have guilds, but 30/09/2025. When did he buy it? 38/25. बराबर है? Bought. सर वो 38 है या 18 है? 1 अगस्त है. क्या 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 नहीं, 30/08 ना बेटा. सोल्ड इट ऑन 1 अगस्त लिखा है क्या मैंने? 30 कर दो, होगा 30 फर्स्ट. 30 अगस्त कर दो, सॉरी. 30/08/2025, ठीक है? ओके. 30/08/2025. 30 नहीं, 31st करना पड़ेगा ना अगस्त में. ठीक है, 32 महीने, ठीक है. 31st कर दो, 31 अगस्त. अगस्त में 31 रहते ना. 31/08. मेरे को 31 ही लिखना था, मैंने गलती से 01 लिख दिया होगा. ठीक, देख लो. ओके. नाउ ही परचेस्ड, इधर बॉट है. परचेस एंड हेल्ड 1 month इधर. ओके क्या? बट हु विल गेट द इंटरेस्ट एंड ऑफ हाउ मेनी मंथ्स? टेल मी दैट. पर 2 महीने का इंटरेस्ट मिस्टर है और 1 महीने का इंटरेस्ट चलेगा फिर वैसे. लॉजिक तो यही बोलता है, बट व्हेन इट कम्स टू कंपनी एंड पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, करेक्ट? लॉजिक तो जो तुम बोल रहे हो वही बनता है. 2 months का इंटरेस्ट किसको? मिस्टर ए. एंड 1 month किसको? मिस्टर बी. बराबर बोल रहा हूं. बट व्हाट डज द कंपनी डू? कंपनी ना, हु हैज सोल्ड, हु हैज बॉट, उसमें कंपनी को इंटरेस्ट नहीं है. कंपनी व्हाट डज इट डू? 30/06/2025 इट विल गो टू द लेजर और रजिस्टर ऑफ डेट होल्डर्स. क्या बोल रहा हूं मैं? रजिस्टर या गवर्नमेंट, हुएवर इज पेइंग द इंटरेस्ट, दे विल गो देयर एंड सी रजिस्टर ऑफ डेट होल्डर्स, करेक्ट? उसमें ऑन 30/06 किसका नाम है? टेल मी. मिस्टर ए. मिस्टर ए को 200 pounds. Then they will go on 30/09/2025. Who is holding the shares? Tell me. Mr. B. Mr. B. So 200 pounds to whom? Tell me. Mr. B. चुपचाप Mr. B. Correct. So logically 30/09/2025 received interest कितना है? 10,000 into 8% into 3/12, यानी कितना? 200 pounds, correct? This is received. But come to the table once again. एक मिनट. Come to the table. Table क्या बोल रहा है? If there is a sale or purchase of bonds between two interest payment date, what you will do? Will accrual basis apply or receipt basis will apply? Tell me. बोलो.
क्या बोल रहा है? ये देखो, परचेस और सेल में अक्रूड है या रिसीट है? टेल मी. accrued. Accrued. That means what they are saying, understand that this not taxable. Correct? This 200 not taxable at all. But what you said, right? On accrual basis, this 2 month का interest taxable. Correct? So how will you do that? 10,000 into 8% into 2/12. कितना आता है बाबा? Tell me. 2/12. 166 समथिंग ना? बराबर है क्या? प्लीज चेक. 133.33. 133 क्या या 166? 133 वॉट एवर. 133.33 pounds. Correct? So total for tax year 25-26 in hands of Mr. A, how much will be taxable? 200 pounds receipt basis पे. Correct? And how much additional tax on accrual basis? Tell me. बोलो. 133.33. So how much is the total taxable interest? 333.33 pounds. इंटरेस्ट ऑन गिल्ड्स. अब इधर आ जाओ मिस्टर ए. एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड. इसके बाद मिस्टर ए विल रिसीव 31/12/25. हाउ मच विल ही रिसीव? डिड ही होल्ड इट फॉर ऑल 3 months? Yes, 200 pounds. Then 31st March 26 he will get 200 pounds. So मिस्टर ए के इसमें टैक्स ईयर 25-26 देखो, रिसीट उसको हुआ है. ही हैज रिसीव्ड हाउ मच? 200 plus 200 plus 200. Correct? But will he be taxable fully? 200 200 200 taxable? Yes sir, this first 200 will not be taxable. This only 1 month ka interest, that is 10,000 into 8% into 1/12. How much is that? 66.67 pounds will be taxed. So either 66.67 pounds plus 200 plus 200. तो total कितना taxable होगा? 466.67 pounds. आर यू अंडरस्टैंडिंग? टेल मी. इसके बाद वाला रिसीट बेसिस पे टैक्स नहीं होगा. इवन इफ इट इज रिसीव्ड, इट इज नॉट टैक्स्ड ऑन रिसीट बेसिस. व्हाट डू यू से जनता? टेल मी. सप्तांशु, क्या लगता है? सर वेलकम. इसके नोट्स लिखवा दोगे क्या? ठीक है, लिखा है ना. ये क्या लिखा है देख. तो इसीलिए तो ये लिखा है. परचेस के में क्या बोला है मैंने? बोलो. अक्रूड इंटरेस्ट विल बी टैक्स फ्रॉम व्हाट? बोलो. डेट ऑफ परचेस टू नेक्स्ट इंटरेस्ट पेमेंट. देख जरा इधर क्या किया है. परचेस जहां हुआ है मिस्टर बी का, क्या किया है? परचेस डेट क्या है? 31/08. राइट. एंड 30/09 को क्या है? टेल मी. रिसीट हुआ है, बट रिसीट के हिसाब से टैक्स करेंगे. और विल यू टैक्स 66.67? टेल मी. 66.67. अब जिधर सेल है ऑन द राइट साइड, करेक्ट, वेर देर इज अ सेल, सेल अक्रूड इंटरेस्ट विल बी टैक्स फ्रॉम लास्ट इंटरेस्ट पेमेंट डेट अप टू डेट ऑफ सेल. देखो, लास्ट इंटरेस्ट पेमेंट डेट 30/06 अप टू व्हाट? बोलो. 31/08. समझ में आ रहा है क्या? तो इतनी शॉर्ट नोट में ये कवर कर लिया क्या? हैव आई कवर्ड इट? टेल मी. छाया, व्हाट डू यू से? क्या लगता है प्रणव? सर सर ये एक प्रणव. बार मुझे रिवाइज करना पड़ेगा थोड़ा. देखो, सिंपल है. आस्क योर सेल्फ बिटवीन टू इंटरेस्ट पेमेंट डेट वेदर देर इज अ परचेस और सेल. करेक्ट? यस. Right? And if there is a purchase or sale, don't worry. If it is a purchase, from date of purchase to next interest payment date will only be taxable. Will this receipt be taxable? No. ये 200 pounds that is received, will it be taxable? नो. No. Correct? देख लो. एक क्वेश्चन भी है इसके ऊपर. 2-3 क्वेश्चन इन योर बुक. हाँ, ये रहा. देखो जरा. मैन ऑन क्वेश्चन दिख रहा है. ये दोनों क्वेश्चन है. अहमद वाला भी है. और हाँ, ये दो तो 100% है. दीज टू क्वेश्चंस. चलो ना, प्रैक्टिस करते. एक 10 मिनट ज्यादा लो, चलेगा? विल इट बी ओके? यस.
सर या तो ये वाले क्वेश्चन ना कल करा लेना, हम लोग नोट्स भी एक बार पढ़ लेंगे तो हम लोग को भी रिवाइज हो चलेगा, तो आप जाएगा। ये एग्जाम्पल देख के आओगे? टेल मी। ये सर अगर हुआ तो सॉल्व कर लेंगे, बट अगर नहीं हो पाया ना तो कल इसका पहले क्लास में ये करा एक मिनट देंगे। रुको, मेरे को प्रॉपरली इसको नेम कर लेने दो बेटा, ठीक है? आई विल राइट एग्जाम स्टाइल क्वेश्चन। ठीक है, चलो फिर मैं, क्या लगता है सत्तांशु, ट्राई कर सकते हैं बेटा? वही सर ट्राई करेंगे, अगर नहीं हुआ तो कल नहीं समझा तो क्लास में कल कर ही लेंगे। सुबह आई विल रिवाइज इट फुल्ली, टेक वन मोर क्वेश्चन ऑन इट, चलेगा? चलेगा सर। Tomorrow then we do ISA, we complete पहले ISA complete, then we do residential status. Probably residential status 1.5 hour चलता है, right? Because I take all questions also in class. Then we'll move to this. What do you say? तुम्हारा क्या है भाई? What was that, right? Property income, प्रॉपर्टी correct? इनकम। Property income. Tomorrow लेकिन property income at the last half an hour 45 minutes में start हो जाएगा. Okay? So be ready that tomorrow we complete residential status and then start with what? Property income. Can we wrap it up for today? Right? I'll just send you the notes as well. Okay? Notes तो आपके पास सॉफ्ट कॉपी है. Should I put the notes का link in your description of the group? बोलो. तो वो मैसेज ही पिन कर दो सर, नोट्स वो का। ये मैसेज सर पिन पिन करके, कर दीजिए। रुको ना, बेटर है, डिस्क्रिप्शन में रहेगा ना, तो इट विल बी मच मोर इजियर फॉर यू. कोई भी ऑप्शन चलेगा सर। वो बेटर है, वो हमेशा एंड तक वही रहेगा ना. देख लो जरा, मैंने ग्रुप डिस्क्रिप्शन में आई पुट अप द नोट्स, just have a look. So if you are okay, then we can wrap it up for today, right? We will meet tomorrow 8 a.m. Till then, bye bye. Take care of your health. Bye.